Hello students, this is Jaya Miss. Starting with the new chapter on page number 29, chapter number 5, multiplication part 1. Okay? See, in your textbook you can see 8 dozen, there is a revision, okay, which you have already done in 3rd standard, but let us do a small recap. 8 dozen bananas were bought to give to the children. Okay? 8 dozen. What is the meaning of 8 dozen? Okay. 1 dozen means what, children? 1 dozen is equal to 12. Anything. 1 dozen आलू दे क्या बोलते हैं, 1 dozen बनाना दे दो, ओके, या 1 dozen मैंगो दे दो, 1 dozen अंडा दे दो. So whenever we say 1 dozen, it means 12. So here we are talking about 8 dozen. 1 dozen banana is 12 bananas. Okay, how many are 8 dozen? So we have to multiply. Kamal, to find out we must multiply 12 by 8, which is very easy. If you know 12's table, you can multiply directly, but there is a twist. This multiplication can be done using the lattice method. So let's use this method. Okay, we are going to do a multiplication using a new method, which is a lattice method. Which method it is? Lattice. Lattice. Lattice method. Right, children? So let us see. Let us learn this new method. Okay, I will try and solve for you. See. So what is the question? 1 dozen banana is 12 bananas. That's what the question says. How many are 8 dozens? Okay, children? 1 dozen मतलब 12 banana. How many are 8 dozens? Okay, in 8 dozen, how many bananas? Okay, so now let us see. इसमें क्या twist है? We are going to use lattice method. As you can see in your textbook, this is a different type of method. 12. अभी ये 12 है. We have to break it. How you will break? 10 plus 2. 10 plus 2 is 12. Right, children? 10 plus 2 is 12. Break कर दिया. So you have to form a box. Make a box this way and then write 10 plus 2. Okay, children, ऐसे लिख दिया. This is the multiplication sign. Everyone knows the multiplication sign? Yes. And कितने dozens? 8 dozens में कितने बनाना होता है? So we will write 8 here. Now see, children, pay attention. Okay, 8 tens are is 80. 8 twos is 16. Mila? Now we will add these two numbers. 80 plus 16. So 8 dozen bananas means 96 bananas. Right, children? This is the method we are going to use. Okay? अपना वो old वाला नहीं use करना है. जैसे 12 multiply by 8. 2 8s are 16. 1 8s are 8. 8 plus 1 9. This is a old method, traditional method. ये हम लोग हमेशा करते हैं. But we should learn new techniques, no? So in the textbook they have asked us to solve the multiplication sum with lattice method. So देखा, जो nearest number है 12 का 10 plus 2 में break कर दिया. 10 plus 2 ऐसे लिख दिया. Multiplication sign is very important. Then you will write 8 dozen. So 8. 10 8s are 80. 8 2s are 16. फिर उनको addition कर दिया. I know it is long method, but you have to do because in your textbook they have asked you to do this method. Similarly, now let us see the second sum. Mahendra,
I will tell you to answer this. I have to multiply 37 by 15. I मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, I'm just going to explain. Okay? 37 को second example. This was the first example. Now I am solving second example. Okay? देखो 37 by 15 से करना है. 37 by 15. So how you will do? पहले इनका expanded form करते हैं. 30 plus 7 ये हो गया expand. Okay? And 15 37 को expand कर दिया. 30 plus 7. 15 how you will expand? 10 plus 5. Right? Now see here it was one digit number. इसलिए एक ही बॉक्स बनाया, वन बॉक्स ओनली. बट हियर इट इज अ 2 digit नंबर 15. सो डेफिनेटली, एंड यहाँ देखो दो नंबर आए ना 10 plus 5. सो वी विल मेक अ कॉलम ऑफ 3 boxes. नथिंग टू वरी चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा. देयर इज नथिंग टू वरी. 30 plus 7 ऐसे लिखोगे. यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन दोगे. देन ये जो आया ना एक्सपांडेड फॉर्म 15 का, इसे 10 और 5 लिखोगे. ओके चिल्ड्रन, देन यू सी 10 30s आ. मल्टीप्लीकेशन का पता है, दोनों जीरो लिख देने का. पहले कितने जीरोज है? 1 3s आ 3, राइट. एंड 10 7s आ इज 70. सॉल्व्ड. अब ये हो गया हमारा, ये कर दिया मल्टीप्लाई दोनों नंबर से. नाउ दिस नंबर 5, द बिलो नंबर 5 30s आ. हाउ मेनी जीरो इज देयर? 1 0. सो ऑटोमेटिकली वी विल राइट 1 0 हियर. यहाँ 2 जीरो थे, 10 में भी जीरो था, 3 में भी जीरो था, इसलिए 2 दोनों लिखा. यहाँ 1 ही जीरो है बिकॉज दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर 5. सो 5 zeros आ 0 एंड 5 3s आ 15. राइट चिल्ड्रन, अब देखो 5 7s आ 35. राइट. अब क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? एड ऑल दी नंबर्स, ऑल 4 नंबर्स. ये भी सॉल्व कर दिया. नाउ वी विल एड ऑल 4 नंबर्स. सो 300 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 35. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ मच वी विल गेट. ऐड करो. आई विल ऐड फॉर यू. वेट. 300 प्लस 150. चिल्ड्रन, आई हैव लेस स्पेस, सो आई एम राइटिंग small. प्लीज do it properly in your maths notebook. 0 0 0 plus 5 is 5. Okay. Then 0 plus 5 is 5. 5 plus 7 is 12. 12 plus 3 is 15. So 1 will come here. 1 plus 3 is 4. 4 plus 1 is 5. So the answer is 555. Okay, 555 children in all on the field. क्वेश्चन पूछा था ना. Now answer this. Students are standing in 15 rows for a drill. There are 37 students in one row. One row में कितने थे? 37 students थे. ऐसे 15 rows बनाए. Okay, so we multiplied it and there were 555 students. Simple. Okay, now let us solve the exercise using lattice method. Same method you are going to use. अब देखो, let us first do the expanded form of it. 53 multiplied by 8. This is the exercise which I am doing from your textbook, page number 29. Okay, I have written down the question, so even you write it. ओके, एक ही नंबर है ना, इसलिए 1 बॉक्स ओनली. देन ऐसे कर लो. 53 है. लेट अस डू द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 53. क्या है एक्सपांडेड फॉर्म 53 का? व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म? 50 प्लस 3.
Okay, so you will write 50 here and 3 here and put multiplication sign. Okay children, always put a multiplication sign, and you will write 8 here. 8 zeros are 0, 8 fives are 40. Right children? 8 threes are 24. अब क्या करोगे, ये जो दोनों आंसर है ना, 400 प्लस 24, ओके, इज इक्वल टू, करो एडिशन, 424. Right? Moving ahead with the second sum. इसका भी बॉक्स बना लो. See how many numbers are there? Only it is a single digit number. So you are going to multiply this way. Right children? Now let's see. Let us do this sum. 25 का expanded form क्या है? What is the expanded form of 25? 20 plus 5. So you will write 20 plus 5. ऐसे लिखना. Then you will write, put multiplication sign here. 9 नीचे लिख लो. 9 zeros are 0. Anything multiplied to 0 is always 0. So 9 zeros are 0. 9 twos are 18. इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया. 9 zeros are 0 आ गया. 9 twos are 18 आ गया. ओके, 9 fives are 45. राइट चिल्ड्रन? अब देखो, नाउ वी गॉट द आंसर. 180 प्लस 45 करना है. ठीक है, 180 प्लस 45 कितना होता है? 5 to 25. Right children? I hope you all are understanding. Please try and solve maths, okay? Just don't copy, try and solve, okay? I am solving most of the sums, but I want you all to do it without copying my sums, okay? एक दो सम्स देख लो, आप मेथड को सीख लो, फिर खुद ट्राई करो, ओके? मिस्टेक होगा तो फिर देखो. नाउ सी 86, 80 एक्सपांडेड फॉर्म, 80 प्लस 6 एक्सपांडेड फॉर्म कर दिया. नाउ अगेन सिमिलर, देयर इज ओनली वन नंबर, नो सिंगल डिजिट नंबर, ओके? 80 plus 6. Put the multiplication sign over here. Then write 5 over here. 5 zeros are 0. 5 eights are 40. ठीक है? So it is 400. 5 6 are, so 5 6 are 30. Now what you will do? Add this two number, no? This is the answer. हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर मिला आप यहाँ लिखोगे 400 प्लस 30. ओके, what is 400 plus 30 children? 400 plus 30. So 0 3 4. It is 430. Right? Okay. Solving the fourth sum. Now children, watch carefully. Okay? 75 multiply by 11. अभी यहाँ 2 digit number है. There is no 1 digit number. So what you have to do? You have to do the expanded form of both the numbers. दोनों नंबर का expanded form. 70 plus 5 and 11 का expanded form is 10 plus 1. Now how many boxes you will make, children? 3 layer box. Okay.
1 2 3 3 लाइन्स विल कम. चलो कर दो ऐसे डिवाइड. देन 75. पुट द मल्टीप्लिकेशन साइन हियर. ये नंबर को इधर नहीं लिखना है. ओके, दिस इज द मल्टीप्लायर. सो यू विल राइट हियर 10 and 1. देखो मैंने कैसे लिखा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं लिखा है. सिंगल डिजिट है तो यूनिट के नीचे ही लिखा है. यू शुड राइट ऑल दिस. यू शुड बी केयरफुल while writing the sum also. Now see, 10 70s are. Okay, let us multiply. 0 multiplied by 0 is 0. Okay, 0 multiplied by 7 is 0. दोनों 0 आ गए. 1 7s are 700. बराबर. और 10 70s are 700. 70 को 10 टाइम्स करोगे तो 700. 10 5s are 50 आ गया. 1 70s are 70. Anything multiplied to 1 is always the same number. Okay, जिससे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा. 1 5s are 5. Okay, this is solved. Now let us write all the expanded form. 700 plus 70 plus 50 plus 5. So the answer is, let us multiply 700. See children, here I will tell you, make a rough column this way. It becomes easier for you. 700 plus 70 plus 50 plus 5. और हमेशा ये साइड से स्टार्ट करना है. ओके, बिकॉज दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, दिस 2 आर 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर. ऐड कर लो. 12. So the answer is 825. 825. Okay. Now I'm solving the second sum for you. चलो 41, 14, यहाँ भी 14 है. 2 digit number, right children? Expanded form of 41 is 40 plus 1. And what is the expanded form of 14? 10 plus 4. Now make a column. See, this is a 2 digit number, so 3 column box. Okay, then what you will do, please write the expanded form of the multiplicand. जो नंबर बड़ा, जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाले रहते हैं ऊपर, उसको मल्टीप्लिकेंड कहते हैं. और जो नीचे नंबर रहता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं. 40 plus 1. देन यू विल पुट अ मल्टीप्लिकेशन. 40 and 1 you will write this way. Okay, then what you will do children, 14 को जो हमने एक्सपांड किया है, you will write 10 and 4. 10 40s are 400. Okay, and 10 1s are 10. 4 40s are, 4 multiplied by 0 is 0. 4 4s are 16. 4 1s are 4. ठीक है. Now let us write the multiplication. Okay, now let us add. 400 plus 160 plus 4.
So it is 564. Okay children, now let us see. 68 or 12 multiply by 12. See, this is a 2-digit number. So first you write the expanded form. Okay, expanded form लिख दिया. Then make a column. See, when you have to make 3 columns, when your multiplicand is of 2-digit number. If your multiplicand is of 1-digit number, so you will just make 2 columns. Okay children? Now let us solve. $60 plus 8 multiply by 10, 2. Okay. 10 60s are 600. 10 8s are 80. 2 60s are 2 times 60 is 120. 2 8s are 16. Okay. Now let us do an addition. 600 plus 120 plus 80 plus 16. So the answer is 816. Okay. This is the exercise which I have done on page number 29. Kindly solve this in your maths long book. Okay children, and practice these sums. Thank you.